Recently, I have been reading this book, The Heart of the Buddha's Teaching, which talks about how one can transform their suffering into peace and liberation. So, author briefly talks about Four Noble Truths, the Noble Eightfold Path, and some other teachings of Buddha. I got a lot of learnings from this book, and some of them जो मुझे काफी प्रभावित किए, I am going to share with you all. So, the number one, हम सब जानते हैं कि बुद्ध सफरिंग्स यानी कि दुख के बारे में बातें करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने सफरिंग को खत्म कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि बुद्ध को दुख नहीं होता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड बुद्ध इज दैट बुद्ध जानते हैं कि हाउ वन कैन ट्रांसफॉर्म देयर सफरिंग इनटू पीस एंड जॉय। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गार्डनर जो अपने गार्डन में पेड़ पौधों की देखभाल करता है। गार्डन में पेड़ पौधे भी है बट वहां पे गार्बेज भी है। बट ही डज नॉट थ्रो अवे द गार्बेज, इन फैक्ट ही ट्रांसफॉर्म्स द गार्बेज इनटू फ्लावर्स। सिमिलरली हमें उन सभी चीजों से दूर नहीं भागना है जो अप्रिय है। बुद्ध कहते हैं कि हमें उसे भी गले लगाना है। टच योर sufferings with care, face it directly and transform that into joy. This is what Buddha teaches us. The second learning that I got from this book is um, about our environment. So हम जिस environment में रहते हैं या फिर हम जिस लोगों के साथ रहते हैं उनका हमारे लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से हम अपने environment को कैसे बनाते हैं उसका प्रभाव वहाँ रहने वाले सभी व्यक्तियों पे पड़ता है। इंसान की सबसे खास बात यह है कि वी ऑलवेज हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू transform ourselves into a human being we want ourselves to be seen as. No one is born here as a good human being or a bad human being. Everyone learns here. अच्छाई, बुराई, प्रेम, द्वेष, these are all sits within us and it depends upon us कि हमें किसे नरिश करना है. This is a practice of mindfulness which tells us, which helps us identify the most wholesome set. So this was my second learning. And the third learning is about right thinking, which is related to the Noble Eightfold Path. We can't have a right thinking without right view, and we can't have a right action without right thinking. This may sound very simple, but this is a very tough job to practice right thinking in our daily life. एंड इस बुक में चार रूल्स बताए गए हैं जिसका वी कैन यूज दैट टू प्रैक्टिस राइट थिंकिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। द नंबर वन ऑथर सेज कि आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, आर यू श्योर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गलत थिंकिंग की वजह से अननेसेसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जा रहे होते हैं एंड रास्ते में अगर कोई रस्सी है पर हम उसे गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं कि दिस इज अ स्नैक, एंड देन देर इज अ अननेसेसरी फियर बेस्ड थिंकिंग का जन्म होता है। इसी प्रकार से कई बार हमें पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से गलत परसिवनेस की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन टू चेक योर नॉलेज, टू चेक योर थिंकिंग, आर यू श्योर अबाउट समथिंग। एंड द सेकेंड रूल of practicing right thinking is um, being in the present moment. So ask yourself a question. What am I doing? अधिकांशतः या तो हम पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। हम ये सोचकर दुखी रहते हैं कि अरे पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ या फिर फ्यूचर में हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। So this is a very powerful question to bring your mind in the present moment. Ask yourself this question, what am I doing? And if your answer is I am reading this book, then tell yourself that reading this book is very important to me and I have to read this with full concentration. If your answer is I am watching this, then tell yourself that this task is very important to me and I have to complete it with full concentration. So live every moment of your life deeply, no matter what you are doing, eating, drinking, talking, walking, etc. The third rule of practicing right thinking is related to your habit energy. Say hello to your habit energy. Author talks कि say hello to your habit energy. अक्सर often we
tend to stick to our habits, even if they are sufferings, they are reasons for our suffering, right? So, for example, look at yourself, look around yourself. Most of us always have been thinking about our work. इवन इफ वी आर नॉट वर्किंग वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट. ऐसा नहीं है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत है, इट्स जस्ट दैट ये हमारी आदत बन चुकी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी रियली गेट रियल कॉन्टैक्ट ऑफ लाइफ. सो ऑथर कहता है कि बी अ गुड फ्रेंड विथ योर हैबिट, से हेलो टू योर हैबिट एनर्जी, get friendly with your habitual patterns. And what it will do, it will help you be aware of your thoughts and actions. You will be more and more aware of your actions and your thoughts, and you will be able to overpower your habit energy. And the fourth one is about Bodhisit. So which means बुद्धत्व की भावना वाला मन, which means the awakened mind. So it is very important to to cultivate a understanding that whatever we are doing, whatever we are uh, thinking, our karma should always bring happiness for all, not just for me, not just for us, but for all the beings. So this is the four rule that we can use in our daily life to practice right thinking and right action. And the fourth learning that I got from this book is that we often tend to separate human beings from non-human beings. हमें ऐसा लगता है कि trees, earth, air, etc. are there for our exploitation. But we have to understand that humans can only survive with the survival of other species. For example, एक फूल तभी खिल सकता है जब उसे sunlight मिले, जब उसे minerals, soil and water मिले. Similarly, human beings cannot be separated from the non-human beings, and therefore, to protect ourselves, we have to protect our environment, we have to protect our other beings. So, these are some of the learnings that I got from this book. At the end, I just want to say that uh, develop a habit of reading book. Make books your good friend. Books, because books teach us a lot. But remember that whatever we are reading, whatever we are learning, we should practice that in our daily life. Because if we are not practicing our learnings, that means we are not learning anything. Thanks.